join in. So basically, obviously she will join in afterwards. Oh, हो गया भाई. So I opened it. Yeah. Use the frame .jpg file to create an image of the frame like this. So let me close extra files. We have over here is this the file? They are saying is use frame.jpg. Okay, this one. So I'll open this in Photoshop. Can you see my screen better? Yes, sir. Okay. So we actually have to make the frame which is rectangular and it has to be much transparent. Okay. Obviously not an issue at all. So what we need to do is obviously, first of all, we have to rotate it. So we'll simply rotate the image. Okay. So clockwise. And then obviously we are going to rotate it in such a way that अच्छा इसके लिए दो तरीके हैं frankly speaking. एक तो ये है कि आर्बिट्री हम कर सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं रोटेट लेट्स से 2% क्लॉकवाइज और नॉट 22 ठीक है एंड देन we can clockwise again. Oh, sorry, Control Z. So it's still not straight. So rotate again like 1% clockwise. So it's almost straight. Now all I have to do is I can use over here is our marquee tool. Use the marquee tool. Select from here this particular part. Okay. And you can just press Control X, cut it, go to File, New, and open up in a transparent, create. And then you paste it, Control V, just paste it over there. Again, I can take the marquee tool. I can frankly zoom in, Control plus, and you can see over here is we want exactly the inner side. So select from here the inner side. If you can exactly have a look at it. This is the inner side. If I've gone till the end, okay, I have, but I'll do it again. So what I meant was exactly from corner. No, फिर भी सही नहीं हुआ. Perfection चाह रहा हूँ. Something like this, right? Once you've selected this, click on the move tool and again Control X. Just cut it. So Control minus, you would see is that we have this as a background, which is transparent. What we need to do is we need to save it as P frame, okay, followed by center number, and it should be saved in a transparent, which actually would be, as you know, a PNG. So I would save it as a PNG. Here we go. So I believe it's in the same folder. Let me just confirm. So copy this folder, the path, sorry, paste it. Here we go. And I will just directly save it as pframe.png. So we have the file as pframe.png. Let's come to the next part. Replace the sky in the sunshine.jpg image with the background new sky.jpg. I'm sorry, can you see my screen? थोड़ी देर के लिए pause हो गया था. Hold on, hold on, hold on. Can you see my screen, beta? I don't know. थोड़ी देर के लिए कोई नेट चला गया था. So we have to Yes. open up. We have to open up this image, and we have to open up this image as well. So we will open up both images. What they're saying over here is that you can see over here is replace the sky in the sunshine image with the background there. So you can see is instead of this background, we need is this background. So you see the important thing to note over here is that the tree, the pine tree, whatever it is, okay, it's there, the date tree. So उसको हमने maintain करना है. ठीक हो गया. So पहले एक बार analysis कर लिया कि आपको चाहिए क्या. ठीक है. तो मेरे पास ये image है एक. This will be as a background of this. So how are we going to take the background of this? If you want to take out the background, इसके दो तरीके हैं.
हम ऑब्वियसली वी कैन यूज इज द मैजिक वो मैग्नेटिक लेसर टूल। उससे काम भी हो सकता है मगर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल से भी somehow you can select and you can press delete. That's also an option available, but again that will also be a bit lengthy. ये भी वैसे इतना लेंथी नहीं होगा। क्विक सेक्शन टूल से भी हो सकता है। But then you also have over here tools available. Background eraser tool. I'm sorry. Again, I think something happened. Gee, can you see my screen, beta? Yeah. So I was saying was, if I click on background eraser tool, I can click over here and the magic eraser spell try कर लेते हैं। So magic eraser से आप देख रहे हो क्या हो रहा है? I can raise this मगर मैं control से दोबारा करता हूँ to show you. So control से. If I use over here is the magic eraser, tolerance को थोड़ा increase कर देता हूँ. Let me make it like 32. Not 42, 32 I meant. 32. इससे क्या होगा? You see ज़्यादा threshold से to delete it. ठीक हो गया? Control Z. ज़्यादा ही हो गया. So you see good. I'm able to delete this. Fine. थोड़ी थोड़ी मैं इसको control Z दोबारा कम करता हूँ and I'll reduce it to let's say 21. So you have to like keep on changing this a bit. ठीक है? So every time आप उसको थोड़ा change करते रहो. So you can see if I click here, fine. You can zoom in more. Actually, the good thing about zooming more will be you will have more perfection. अच्छा, जाहिर है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो परफेक्ट नहीं होगा। So see, it's perfectly being done. So I repeat again, I am using over here is the magic eraser tool. So magic eraser tool से जहाँ क्लिक करते हो उसका बैकग्राउंड एक्चुअली somehow disappear हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो रहा है। तो कब क्योंकि आई हैव zoomed in a lot. So from that perspective बिल्कुल सही है। And I'm trying to be very careful as well. So I'm trying to make it as accurate as possible, as you can see. मैं minute accuracy का भी ख्याल रख रहा हूँ. So here we go. So yeah, I mean, I can just keep on doing this over here as well. थोड़ा सा I can reduce this more. Maybe I can make it like 15. अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी है वरना बहुत ही शार्पनेस आ जाएगी। और उससे अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ज़्यादा मैं नहीं करूँ। ज़्यादा ही मैंने ऐसे कर दिया है। लास्ट टाइम आई डिड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। द मोर यू ट्राई टू फाइन, ठीक है ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता तो बहुत ख़राब हो गया थोड़ा सा। इन दैट केस व्हाट आई कुड डू इज, अगर मैं ज़्यादा ओवर कर लिया है तो इंस्टेड ऑफ आई गो बैक, मैं इरेजर टूल को यूज़ करते हुए थोड़ा सा यू नो द स्क्वायर ब्रैकेट्स, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हुए यू कैन इंक्रीज। सो इफ यू ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट आप ब्रश को डिक्रीज कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप साथ ही इसका साइज का सेट कर सकते हो एंड यू कैन सेलेक्ट इस कौन सा ब्रश चाहिए आपको। थोड़ा साइज बड़ा कर लो चाहे तो ज़्यादा ही बढ़ाओ। वैसे आई थिंक सो आई शुड स्टॉप, इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे करने की। मुझे सिर्फ यही कंसर्न आ रहा था कि जो बहुत शार्प एजेस है ना वो तो अच्छी लगेंगी, उनको मैं थोड़ा अनशार्प कर रहा हूँ। क्योंकि उससे इफ इट्स टू शार्प आपकी इमेज में इट विल लुक वेरी अनरियलिस्टिक शार्प कटिंग्स। सो उसको अवॉइड करने के लिए आई एम जस्ट डूइंग दिस एनीवे। अच्छा, आई थिंक सो इट्स फाइन। ओके, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। कंट्रोल माइनस, लेट्स गो बैक। ठीक है। एक्चुअली मुझे दोबारा करना पड़ेगा मगर ठीक है फाइन। बहुत परफेक्टली नहीं हुआ जिस तरह मुझे डर था, वही हुआ कि मैंने बहुत शार्प कट एडजस्ट कर दिया। क्या बेटा, इसको अभी ट्राई कर लेना आप एक बार यूजिंग दिस, बट ट्राई टू बी केयरफुल विद व्हाइल यू कट इट डाउन।
अब हमने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर विद द बैकग्राउंड. सो इफ यू लुक एट द मार्किंग स्कीम, उन्होंने ऑब्वियसली मार्क्स दिए आपको, कितने आपने किया हुआ उसमें करी. इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ. दिस लेयर डाउन. नाउ व्हाट विल हैपन इज इफ आई एक्चुअली bring this layer over here, so you will see is this comes at the back. Use control minus, go at the back, press shift okay, reduce this size and make sure the size somehow covers up in such a way that it's in the image as you can see. ठीक है, जिस तरह इमेज में आ रहा है, यूं क्लाउड्स इस तरफ आ रहे हैं. ओके, सो बिल्कुल उसी तरह ही आ रहा है. यस, ठीक है रानिया, फिल्जा, उसी तरह आ रहा है ना? यस यस और नो? सर। ठीक है, तो सम बिल्कुल ठीक हो गया. मैं कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन चाह रहा था मगर ठीक है. सो वंस वी डन विद दिस, ऑब्वियसली आपको भी परफेक्शन से करना चाहिए. सेव द इमेज एज सनसेट, सो फॉलोड बाय योर नेम. अच्छा, दे डिड नॉट से टू सेव इट एज nothing. Yeah, so probably we'll save it as JPG. So save this as uh, uh, we can simply export this. अगर save as में नहीं आ रहा, export as JPG. ठीक है, फाइन. इसको एक्सपोर्ट करते हैं और फोल्डर में हमारे वही उसी नाम इसका रख देते हैं हम, इसका सनसेट. ठीक है, एडमिट. वेयर एम आई मैंने कहाँ सेव किया था इसको? डाउनलोड्स में प्रॉब्ली. स्पेसिमन, आई थिंक दिस इज द फोल्डर. या, सो आई विल सेव इट हियर. ओके, तो ये एक्सपोर्ट हो गया. ठीक है, आई हैव दिस ओवर हियर. अच्छा, लेट मी हैव अ लुक. सो वी हैव दिस. अच्छा, ये पार्ट तो हो गया. इसका जो अगला पार्ट था ना, वो जरा और चैलेंजिंग था फ्रैंकली स्पीकिंग. रिमूव द डोर इन द आर्चवे एज शोन, सेव द इमेज एज सनसेट एडिट फॉर. सो हमने इसका डोर रिमूव करना है. अच्छा, लेट्स सी हाउ वी कैन मूव. ईमान बेटा, आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई विल शेयर इट, प्लीज आप मेक श्योर यू गो थ्रू इट. ठीक है ओके ईमान? सर। जी बेटा, ठीक है. और अगर आपके लिस्ट में, वैसे हम फ्रैंकली स्पीकिंग जावास्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो कल भी हम जावास्क्रिप्टिंग कंटिन्यू करेंगे. वी वर एक्चुअली डूइंग दैट. दरम्यान में पेपर्स आ गए, फाइन, मैं मुझे कोई इशू नहीं है. सो एक्चुअली वी हैव टू रिमूव द डोर. अब डोर कैसे रिमूव करेंगे? सो आई इसके लिए क्लोन टूल इज द बेस्ट ऑप्शन. आई यूज अ क्लोन टूल. मगर जब भी आप क्लोन टूल यूज करो, रिमेंबर दैट, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आई एम रिफरिंग टू व्हाट. आई एम रिफरिंग टू टू ब्रैकेट्स. आई यूज दिस ब्रैकेट टू decrease the size of the brush, increase the size of the brush, these two brackets. So you can see is when I press alt, okay, alt, I can take a sample from here and I can come here and I can brush it. Okay, take alt, take a sample, and you क्यों नहीं brush क्यों नहीं हो रहा? Okay, मैं दोबारा. Oh, sorry. I'm actually, you know what's happening? Great. That's a different image. That's a different image. मेरी बात समझ रहे हो? वो तो different images हैं. अब मैं इनको क्या किस तरह करूँ? यस। Do you know what key do we use to combine both of them? Control E. So if I use Control E, I can combine from top to bottom. अब मैंने इनको combine कर दिया, ग्रुप कर दिया Control E से, टॉप से बॉटम. अब अगर मैं यूज करता हूँ ये alt, and if I take a sample from here, you see what will happen? I can actually brush it over it. So slow and steady, I'll take samples, but again, don't try to go really fast. And what I'll do is I'll zoom in. So every time you want more perfection, zoom in. तो zoom in से काम किया करो. You will see is that अब मेरा ब्रश ठीक है, थोड़ा बड़ा है. I can actually reduce it so that take a sam. मैं साथ साथ आई एम प्रेसिंग ऑल्ट. मैं साथ साथ ऑल्ट लेके सैंपल लिए जा रहा हूँ और साथ साथ मैं ये किए जा रहा हूँ. आप ओके, आई एम जस्ट नॉट. अब मैं थोड़ा सैंपल लेता हूँ, फिर ब्रश कर देता हूँ. सैंपल लिया, ब्रश, सैंपल लिया, ब्रश. सो देयर आर ऑब्वियसली फास्टर वेज, मगर क्लोन टूल इज द बेस्ट. वैसे हम पैच टूल भी यूज कर सकते थे बाय द वे, मेरे एकदम में जेन में आया. खैर एनीवे, वी विल कंटिन्यू विद दिस. पैच टूल से भी काफी अच्छा हो सकता था. सो आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल. ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने देखना है कौन सा टूल आपको ज्यादा पसंद है, एंड यू कैन एक्चुअली यूज.
अब देखो ये मुझे ना थोड़ा शार्पनेस चाहिए होगी, क्योंकि वो ना इट विल नॉट लुक नाइस कि अगर मैं इसको, so because now we need some sharpness because it's a mountain, so you can see is ये माउंटेन एक्चुअली यूं ही ब्लैक यूं ही जा रही है, मैं गलत नहीं कर रहा, ऐसे ही है। वैसे मैं ब्लर टूल भी यूज कर सकता हूँ इधर आके, मगर अच्छा मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ कि अगर इट्स टेकिंग मोर टाइम, व्हाट आई कुड डू इज, मैंने कहीं ट्री को तो नहीं कर दिया, सॉरी, कंट्रोल जी, जी मैंने गलती से ट्री को भी कर दिया था थोड़ा सा। सो दैट्स माई ट्री। मैं एक बार पिक्चर में देख लूँ कैसे आ रहा है, जूम इन कर लूँ थोड़ा। जी वैसे उन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, ऐसे गाय भी है, मैं ठीक ही कर रहा था। सो यू सी दिस ओवर हेयर, ये ट्री है, और ट्री का दिस पार्ट, दिस इज ऑल ब्लैक। जी, तो ये आपको ये यूं ही आहिस्ते से करना पड़ेगा। मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको, ये टूल एंड आई प्रेस दिस एंड आहिस्ता 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 हम इसको, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इस साइड को कर लूँ फिर वापस आता हूँ। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस द डोर ब्लैक। तो आप नोट कर रहे हो एक्चुअली ये सारा ब्लैक ही है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट दिस वे हमें सारा ब्लैक ही करना पड़ेगा। इसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको और एक बात करो, मैं आई विल ऐड ए न्यू लेयर, आई विल यूज ओवर हेयर इज द लेसो टूल। सो मैं लेसो टूल से क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस पार्ट, थोड़ा सा जब जल्दी से हो गया तो मैं दोबारा, माई माउस इज बिट शेकी, मगर आई डू इट अगेन, आई सेलेक्ट दिस एरिया। सो फ्री हैंड लेसो टूल का यही फायदा है कि एक्चुअली यू कैन, सो फाइन, now I have to actually paint it. So obviously I'll use the paint and I'll paint this. But in order to select exactly the same color, मैं यहाँ click करूँगा to get the exact same shade. यहाँ shade लेता हूँ दोबारा मैं एक और बार, और मैं इसको दोबारा पेंट करता हूँ। इसका फायदा ये हुआ कि I'll get exactly the same shade. So you see if I control minus करूँगा तो I have exactly what they wanted. Can you see that? ठीक है, मेरे पास exactly वही आ गया है। Yes or no? Sir, Fine? can you repeat this part? क्या बेटा? Can you please repeat this? जी बेटा, ऑल आई डिड वाज, देखो बेटा, मैंने ऑल आई डिड वाज कंट्रोल प्लस, सो आई जूम्ड इन। तो बेटा मैंने आई एडेड ए न्यू लेयर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने एक लेयर ऐड की, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ दैट आफ्टर एडिंग दैट लेयर आई यूज द लेसो टूल। लेसो टूल से बेटा मैंने सेलेक्ट किया वो पोर्शन, मैं रफली बता रहा हूँ आप, करने के बाद मैंने कर दिया पेंट, और पेंट करने के बाद मैंने क्या किया, आई क्लिक्ड ऑन दिस पेंट एंड आई सिलेक्टेड द एग्जैक्ट कलर ऑफ दैट एंड आई पेंटेड अगेन, सो दैट वो मैच कर जाए एग्जैक्टली। सो समहाउ यू सी, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ ना बेटा, ये देखो एट द बैक, ये देखो, ये इसके टॉप पे है, ये उसके बैक पे है। यस और नो? गेट माई पॉइंट? सो आई एडेड अ लेयर ऑन टॉप ऑफ इट। इसी तरह हमने काम क्या करना है, मैं एक और लेयर, आई विल ऐड अनदर लेयर,
ठीक है। एंड आई नीड टू एक्चुअली जो लेक्स है इसको एक्सटेंड करना है। अब इसके लिए भी नहीं, लेयर की जरूरत नहीं है यहाँ तक। अच्छा देखो, यहाँ मुझे थोड़ा सा मुझे एहसास हो रहा है कि मैं ब्लैक एरिया यहाँ भी ला सकता था। तो नो प्रॉब्लम, व्हाट आई कुड डू इज, मैं आई कुड इवन एक्सटेंड दिस यहाँ तक। बल्कि अगर ना भी करूँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम यू कुड डू इज, वो तो खैर मसला ही नहीं है। हम कंट्रोल ई करके मर्ज कर सकते हैं दोबारा, और फिर हम दोबारा वी कैन यूज। अच्छा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली काम है। सो इसमें इरिटेट वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस इज द वे इट गोज। ब्लैक सैंपल लो, और बिकॉज वंस यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, आप उसको जल्दी जल्दी करोगे, और उससे क्या होगा, आपका काम खराब होगा। सो स्लो एंड स्टडी। फोटोशॉप इज एन इजी मॉड्यूल, बट काम इसका ज़रा लंबा होता है। सो यू कैन सी इज, मैं इसको ज़रा ब्लैक को क्लियरली कर रहा हूँ, सॉरी, यू। ठीक हो गया, स्ट्रेट हो गया। नाउ बहुत क्लोनिंग का काम है इधर। क्लोनिंग की बजाय हम पैच कर सकते हैं। लेट मी सी, थोड़ा ट्राई करते हैं पैच को, तो अपना काम आसान करने के लिए। सो वेयर इज माई पैच टूल, वेयर इज माई पैच टूल, पैच टूल कहाँ गया मेरा? या इधर होता है पैच टूल, पैच टूल। अच्छा, हाउ डज द पैच टूल वर्क? Well, what I'll do is I will, first of all, let's say take this area, and I will replace it with this area, patch करने के लिए। ठीक है? But again, obviously I will do it again and again. मैं बार बार करूँगा। I will take a sample of this and I will replace it with this. Sample of this to be replaced with this. ठीक है? बाद में उसको मैं सही करूँगा उससे क्लोन से। जरा ये कि जल्दी आता है इससे। So you can see over here is I could do is take a sample of this and drag it over here and replace it. No, let's come back to clone 2. What I could do now is, again, मैं थोड़ा इसका इसका increase करता हूँ। ठीक है, I will press Alt, click here, और हम इसको आगे आगे चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। Now same, take a sample from here, take a sample from here, ठीक है। Now take a sample from here, take a sample from here. I'm pressing Alt, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि I'm pressing Alt. Press Alt, take a sample from here. Alt, take a sample from here. Take a sample from here. Take a sample from here. Take a sample. So where we are, here we are. Control minus करें. Let's see where we are. So this is where we are. Let's look at the example. Are we not quite close? Yes or no? Okay, right? थोड़ा सा ये एरिया, नो प्रॉब्लम, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हाउ, यू विल जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस, और आप क्या करोगे, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। सो दिस वन मुझे ये सही नहीं लगा, तो आप ऑल्ट प्रेस करो। आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? ईमान, Yes, sir. समझ आ रही है ना? मैंने यही कहा ना। अच्छा, बड़ा टिपिकल ये जो है ना, क्लोनिंग वगैरह, क्लोनिंग पैच टूल वगैरह, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल थिंग दैट यू हैव। सो वी हैव डन दिस एज वेल। आप देख रहे हो, वी डन दिस पार्ट एज। इसको मैं जूम आउट करूं, तो आप देख रहे हो हमने एक्चुअली इसको ऐसा बनाना था। ठीक है,
and now what we have is we have this. So we've done this as well. इसके बाद हमने क्या करना है? Save this. Okay, now we have to do is we have to fit the frame into this. कोई मसला नहीं है. आप अगले पार्ट में इसको सेव एज करके आपने फॉर एग्जांपल सेव एज कर लिया है. जस्ट फाइल ओपन करो. Open up the frame that you saved as a PNG. Bring it over here and click drag it over here. Okay, and what you do is you simply increase the size of this. अच्छा इसमें why is the aspect ratio being maintained? I don't want to maintain it. So दोबारा इसको करता हूँ. What does it say? Automatically group. Why is the aspect ratio maintained? Sorry, लॉक हुआ है. बिल्कुल सही कर रहे हैं. हमने इसको किस तरह करना है? जी थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूडल क्यों आ रहा है? Why is it longitudinal? Is it not? So what I did was कि जो actual frame वाला image थी उसके पीछे डाल दिया था दूसरी जो न्यू इमेज सनसेट की बनाई थी. हाँ नहीं मगर लॉन्गिट्यूडनल क्यों आ रहा है? मैं इसे नोट कर रहा हूँ. लॉन्गिट्यूडनल Because I क्यों नहीं आ think रहा? आपकी sunset picture is like longitudinal और वो ओह यस दूसरी यस है. मैंने उसको फॉलो किया. यू राइट. तो हाँ हम कर सकते हैं. आप सही कह रही हो. व्हाट वी कुड डू इज मुझे फिर ये जो इमेज है इस सारे को साइज चेंज करूं मैं समथिंग लाइक दिस करके. हाँ क्रॉप कर लेंगे कोई इशू नहीं है. आप सही कह रहे हो. वी कुड डू दिस. सो इधर आओ. इसको इधर रखो. ठीक है आप सही कह रहे हो. और उसके बाद हम क्रॉप यूज करके वी कुड सिंपली क्योंकि दे हैवंट टोल्ड अस द डायमेंशन. तो नो इशू. ठीक हो गया. सो यस थोड़ा फ्रेम को और एडजस्ट करो. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. फ्रेम आ गया. उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज ये फ्रेम भी आ गया एंड दिस पार्ट इज डन. यस और नो. आर वी क्लियर? बाकी वो इलिस्ट्रेटर वाला पार्ट है वो आप ट्राई करना. इधर आसान है वैसे. इफ यू वांट मैं ये भी आपके साथ कर दूंगा. इट्स और हमने बस ये लगाना It's है. very easy. हाँ इट्स इज एग्जैक्टली. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसके बाद फिर हमारा एनिमेशन का पार्ट है. ठीक है. आई डू दिस विद यू सम डे एज वेल व्हेन वंस डूइंग एनिमेशन. ठीक है. अब बल्कि आप ट्राई करो. व्हाई डोंट यू ट्राई द रेस्ट ऑफ द पार्ट एंड आई कैन प्रॉब्ली डिस्कस विद यू सम अदर डे. कल मैं चाह रहा हूँ कि बेटा हम जरा जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर लें जो हम पहुंच रहे थे. लेट्स फिनिश ऑल दैट. बट दैट्स वेरी क्रूशियल. सो लेट्स Okay डू sir. दैट. ठीक है. राइट. एनी क्वेश्चन बेटा? एनीवन? कौन कौन No था? sir. रानिया फिल्जा ईमान. ईमान गॉट द पॉइंट बेटा? Yes, sir. ईमान how is your Photoshop by the way? Sir, my Photoshop is better than my Illustrator. अच्छा. So you want me to discuss it listed someday? I will do it. Okay. मगर कल बेटा हम जावास्क्रिप्टिंग जरा कर लें. Let's Okay, focus on sir. that tomorrow. Let's do JavaScripting Sir, tomorrow. tomorrow will it be 11 p.m.? हाँ कल क्या टाइम रखें बताओ आप लोग. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल चांद रात हो. Yes. तो क्या टाइम कोई भी हो रखें? जाए. पहले But रख I'm लें. fine with any time. कोई भी I टाइम think रख so. लें. I think so. 9 is fine. Sure, Tomorrow at sure sir. 9. Let's do it tomorrow at 9. Okay. Sir, फिल्जा 11 रानी. ही कर ले. हाँ 11. ठीक है 11 कर Anytime, लेते. sir. ठीक है ठीक है. Then let's make it 11:30. ठीक है. Okay sir. 11:30. Okay, sir. चलो ओके. कल मिलते हैं फिर बेटा. ओके. ओके. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. हाफिज.